Okay, so we are going to start over with debroglie. सुनो पीना नहीं आएगा पीना नहीं आएगा अब debroglie ने एक बहुत ही मजेदार काम किया था, बहुत ही सिंपल सा बहुत ही मजेदार सा काम किया था. What debroglie did was he actually joined two equations of two different scientists. Who were those scientists? One was Planck. Okay. Another was our dear old Einstein. Okay. You know the Planck's equation. Planck's equation is E is equal to h mu. That's equation given by Planck. And E is equal to h mu को हम लिख सकते हैं E is equal to hc by lambda. Now that is what we call Planck's equation, and this is what we term as the total energy of the photon. That's the energy of light. Einstein ने भी एक equation दी थी. Einstein की equation हम generally मानते हैं E is equal to mc square. That's what we have heard. लेकिन E is equal to mc square में एक छोटा सा limitation है. That limitation is that E is equal to mc square is the energy of a particle, or rather than it is the mass energy equivalence for a particle at rest or at moving at a speed much lower than the speed of light. That is what we call as mass energy equivalence. Einstein की जो actual equation है, that is not E is equal to mc square, that is equal to E is equal to under root m naught square c raised to power 4 plus E square c square. ठीक है? Where m naught is called the rest mass. Rest mass is the mass of a particle when it is at rest or it is moving at a speed much lower than the speed of light. That is what we call as rest mass. Now, this is called momentum. Okay? Momentum is due to motion, very obviously. और एक बात का ध्यान रखना कि मोशन चाहे जो मर्जी हो, जिस तरीके की भी हो, कितनी भी फास्ट हो, कितनी भी स्लो हो, motion is always relative. ठीक है? मोशन कभी भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती, हमेशा रिलेटिव होती है. जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, इस समय it seems as if I am at rest, you are at rest. But the fact is we are on Earth and Earth itself is moving. Earth is rotating. So if it is rotating, we can't be at rest. And then it is revolving around the sun, it can't be at rest. The sun is also revolving around the center of galaxy, it can't be at rest. Galaxy center also is revolving around the center of universe, it can't be at rest. So I don't know whether the universe is revolving or not, but the fact is motion is relative in relation to. So this momentum, since it's about motion, this also is relative. So this part of the equation is relative. So this energy has two parts. One due to the mass, which is rest mass, and another which is due to motion, which is relative. So I tend to say this is the relative part of motion, of energy. This is the relativistic energy. Is it clear? अब एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पर normal particles की बात करते हैं, तो normal particles के अंदर जो momentum है, which is generally mv is the momentum, तो velocity बहुत कम होती है as compared to the speed of light. तो यहाँ पे अगर आप कोई भी velocity डालते हो, anything less than 90% the speed of light, then in that case this p square c square goes very small in comparison to m naught square c raised to power 4. So what happens is mostly this part is neglected. अगर मैं normal चीजों की बात करूँ, जैसे कि अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो we may consider ourselves at rest. अगर हम अर्थ की मूवमेंट की भी बात करते हैं, तो मूवमेंट कितनी है? अगर हम अर्थ की रोटेशन की बात करते हैं, 1200 किलोमीटर पर आवर, that is the speed of rotation of Earth. And अगर हम उसकी मोशन की बात करते हैं around the sun, that is 30 kilometers per second, that is the speed of Earth around the sun. तो अगर 30 kilometers per second की भी बात करूँ, तो लाइट की स्पीड is 3 lakh kilometers per second.
3 into 10 to the power 8 meters per second. So in comparison to that, the motion of Earth is nothing. So as good as we are at rest. Clear? तो इस वजह से जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देते फॉर ऑल द पार्टिकल्स, देन इन दैट केस ये पार्ट तो खत्म हो गया, इट बिकम्स √m square c raised to power 4, that becomes mc square. That is how the energy of a particle turns out to be mc square. Now अब हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं. Rather than talking about a particle, let's talk about a photon. जब हम फोटोन की बात करते हैं तो फोटोन एक उल्टी चीज है, उसका रेस्ट मास 0 है. फोटोन को रोका नहीं जा सकता. The moment photon is stopped, it gets annihilated, खत्म हो जाता है. उसका कोई अपना रेस्ट मास नहीं है. तो फोटोन के लिए ये पार्ट 0 है. फोटोन के लिए E is equal to PC हो जाएगा. परफेक्ट, E is equal to PC हो जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोटोन के जो मोमेंटम है वो mv नहीं होता, क्योंकि फोटोन का मास ही नहीं, तो उसका मोमेंटम का mv फॉर्मूला नहीं चलेगा. फोटोन को जो मोमेंटम दिया जाता है दैट इज E by c. E by c is the photon's momentum coming from this particular equation itself. ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है for a photon E is equal to PC for a photon. ठीक है, yes. तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं. अब मजेदार बात ये, this also tells about the total energy of photon. This also is talking about the total energy of the photon, क्योंकि उसके अंदर रेस्ट मास 0 है, इसलिए total energy of the photon आ गया. डी ब्रॉगली साहब ने बहुत सिंपल सा काम किया, उन्होंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. और जब उसने इन दोनों को इक्वेट किया, then in that case he got h c by lambda is equal to pc. ठीक है, yeah? And he got lambda is equal to h by p. कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसके बाद डी ब्रॉगली ने इसको एक्सटेंड किया. अब एक्सटेंड कैसे किया? उसने कहा कि लेट अस से टेक अ पार्टिकल. अब देखो एक बात का ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर असम्पशंस नहीं होते, और ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है. नो, इट इज नॉट ऑल अबाउट फिजिक्स. अभी तो शुरुआत में पहले हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री के बाद इसमें फिर फिजिक्स शुरू होती है, और फिजिक्स के बाद इसमें आती है मैथमेटिक्स. एंड द फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन दिस चैप्टर आर बियॉन्ड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, ऑल थिंग्स. ठीक, तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं. तो h by p है. अब देखो इसके बाद उसने डी ब्रॉगली ने क्या एजम्पशन लेने शुरू किए. मैंने इसलिए बोला था कि इसमें केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में एजम्पशंस नहीं होते, केमिस्ट्री इज ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे assumption से शुरू किया उसने. assumption क्या लिया? Let us say we have a particle moving at a speed approaching the speed of light. That is having a speed beyond the 90% of light or 90% of light. अब अगर कोई पार्टिकल 90% ऑफ लाइट की स्पीड से ऊपर मूव कर रहा है, then in that case उसका ये p square c square वाला component नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. Now this particle is going to have two components of energy. One, the rest mass component, and another the momentum component or the velocity or relativistic component. डी ब्रॉगली ने बड़ा मजेदार सी बात की. उसने कहा देखो आपने जब वेक्टर्स किए होंगे तब आपने वेक्टर्स के अंदर ये किया होगा, वेक्टर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इन द वेरियस पार्ट्स, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो सकते हैं. अभी तो छोटा सा पार्ट आपने किया था, तो यहाँ पर क्या किया उसने कहा एनर्जी कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू पार्ट्स and each part can be treated separately. They can be dealt with separately without any interference from the other part. तो उसने ये कहा कि जो p square c square वाला पार्ट है उसको मैं इंडिपेंडेंटली डील कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम मास. इसका और ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे से. भाई वो तो मोशन पे है, ये रेस्ट पे है. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत छोटी सी इम्पॉर्टेंट सी बात, मैं एक एग्जांपल ले रहा था स्टूडेंट के साथ, वो ये कि लेट अस से अ चाइल्ड is born to Indian parents in US. US has laws that anybody born in US is a US citizen. India has law that anybody born with two Indian parents is Indian. Now the child enjoys a unique property, that is
he is an Indian citizen as well as a US citizen. He has a dual citizenship. Clear? And the important property of that is that he enjoys both the citizenship till the age of 18. At the age of 18, the child has to choose himself or herself whether the person wants to be an Indian citizen or the US citizen. They have a choice. Clear? Now, in the same manner, this particle is moving at the speed near to the speed of light. At that time, it has a relativistic energy, but it has not lost this energy due to mass. This energy is with the particle. So, particle has a dual character. It has the rest mass character also, and it has a relativistic motion also. ठीक है? अब important बात ये है कि when the child is in US, उस केस में इंडियन सिटीजनशिप है या नहीं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. Absolute independent. No US person is going to ask that whether you have the Indian citizenship or not. They may ask you have US citizenship or not, but they are not going to ask Indian. Similarly, when the child is in India, nobody bothers about US citizenship, and the child has both. Clear? In the same manner, this particle has both natures. Clear? The only thing is what kind of experiment we have set up, whether it is able to detect which component. अब जैसे हम लाइट के बारे में बात करते हैं, लाइट हैज डुअल कैरेक्टर. हम कभी कहते हैं कि लाइट मे शो द पार्टिकल नेचर और द वेव नेचर. द इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइट डजंट शो द वेव नेचर और द पार्टिकल नेचर. इट इज ऑलवेज एवरीथिंग. प्रॉब्लम हमारे एक्सपेरिमेंट्स की है जो एक बार में किसी एक कंपोनेंट को ही स्टडी कर पाते हैं, वो दोनों कंपोनेंट को एक बार में स्टडी नहीं कर पाते. इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि लाइट इस समय वेव है, इस समय पार्टिकल है, पर लाइट हर समय हर चीज है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जब डीब्रॉग्ली ने ये बोला कि यहाँ पे इसके अंदर एक रिलेटिविस्टिक पार्ट होगा, तो उसने सीधी सीधी बात बोली कि अगर रिलेटिविस्टिक पार्ट है तो इट मस्ट बिहेव लाइक रिलेटिविस्टिक पार्ट, एंड रिलेटिविस्टिक पार्ट इज डिफाइंड बाय अ फोटोन. इट हैज ओनली रिलेटिविस्टिक पार्ट. तो उसने ये कहा कि जो रिलेटिविस्टिक पार्ट है दैट मस्ट बिहेव लाइक फोटोन. इसकी प्रॉपर्टी फोटोन जैसी होनी चाहिए. उसने सिर्फ इस पार्ट की बात की. तो उसने कहा कि अगर मैं पार्टिकल की सिर्फ रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात करूं, यानी कि पूरी एनर्जी की, टोटल एनर्जी की बात नहीं, फोटोन की टोटल एनर्जी की बात हो रही थी, तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात नहीं करता, सिर्फ रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात करता हूं, देन इन दैट केस लैम्डा इज इक्वल टू h by p इवन फॉर अ पार्टिकल. अब पार्टिकल की बात ये उसका मास है तो उसका मोमेंटम mv है. तो he said that lambda is going to be h by p is equal to h by mv for a particle. Peculiar सी चीज. He said that particle would have a wavelength. वो वेव का है और ये पार्टिकल का. इम्पोर्टेंट बात, एक मिनट ध्यान से सुनोगे. ये दोनों पार्टिकल के, ये वेव का और पार्टिकल का नहीं है, ये दोनों पार्टिकल के हैं. मतलब कि इट इज अ पार्टिकल एंड इट इज अ वेव. It is showing both the characters. Yes. ठीक है. अब एक छोटी सी बात, मैं थोड़ा सा इस समय लिबर्टी ले रहा हूँ एक चीज समझाने की आपको, वो ये that what is the difference between a particle and a wave? Why are we so much concerned about ये तो particle और wave दोनों हो गए? Why are we concerned so much? Because wave is something that is continuous, whereas a particle is an individual, so it's not that continuous. Wave is continuous? How do you say wave is continuous? As in ki, okay, I read this in context to this black body radiation and photoelectric effect. So in you are not talking about wave being continuous, you are talking about the spectra being continuous. Yeah. But that's a different thing. Spectra being continuous would mean that we have the waves of all frequency and wavelength. Yeah. That would mean this continuous spectra. Wave being continuous would mean that wave does not have any space where it is not existing. It is throughout continuous. तो दोनों में फर्क हो जाता है. Continuous spectra तो हमारे पास होता है. अगर हम सनलाइट की बात करते हैं तो वो continuous spectra है.
But wave, sorry to say, is discontinuous. Wave अपने आप में क्या यार लोग कैसे अभी तो आपने बोला continuous, अब discontinuous मैंने बोल दिया तो आपने या बोल दिया कैसे? नहीं like okay, it's discontinuous because उसकी अलग-अलग wavelengths हो सकती हैं different. फिर गलती, वेव की अलग-अलग वेवलेंथ नहीं होती, वेव की एक ही वेवलेंथ होती है. Okay, कैसे? बेटा वो अलग-अलग वेव्स हैं. Okay. एक वेव की अलग-अलग वेवलेंथ नहीं है. अलग-अलग वेव्स की अलग-अलग वेवलेंथ है. वेव डिस्कंटिन्यूअस कैसे? आप सुनो, आराम से. ठीक है. जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव को हम जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है वेव का वो इस तरीके से कर दिया जाता है. Let's say we are talking about a standing wave. देखो, the wave which is in a confines, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो वेव एग्जिस्ट करता है, that is a standing wave. एक होता है traveling wave, एक होता है standing wave. तो ये एक standing wave है which is in the confines of two points. जैसे कि अगर गिटार स्ट्रिंग को प्लग कर दिया जाए तो वो वाइब्रेट करती रहती है, तो उसी पोजीशन पे वाइब्रेट करती है, वेव मूव नहीं करता. दैट्स अ स्टैंडिंग वेव. अगर मैं बोल रहा हूँ तो दिस इज नॉट अ स्टैंडिंग वेव, दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि यहाँ पे रेयर कंप्रेशन हो गया, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, एंड इट वुड बी एक्चुअली मूविंग. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू लिंगर हियर. तो दैट्स अ ट्रैवलिंग वेव. जब हम स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं तो उसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली फिक्स्ड होती है, वो ये पॉइंट्स होते हैं. These are the points which are not vibrating, which are fixed. These points are termed nodes. Clear? These points, which are the farthest position from the mean position, which are going to be at the maximum points, these are called antinodes. This maximum distance from the mean position is termed as amplitude, while the distance between the two crests or two troughs, this is the troughs and these are the two crests, that is called the wavelength. Now whether it be the standing wave, whether it be the traveling wave, these things remain constant, but nodes they do not. एक standing wave के अंदर nodes की position fixed होती है, तो हम उसको नोड से आइडेंटिफाई करते हैं कि नोड्स आर फिक्स्ड, दैट इज इट्स अ स्टैंडिंग वेव. बट इफ द नोड्स आर शिफ्टिंग इट बिकम्स अ ट्रैवलिंग वेव. नोड्स आर अ पोजीशन वेयर द वेव डज नॉट एग्जिस्ट. So node does the wave does not exist at nodes. Wave is discontinuous. ये चीज समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे कहूँ इस रीजन में वेव कहाँ है, will you be able to get up and point where the wave is? I guess antinodes. कितनी है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 एंटीनोड्स हैं वेव का. You can't tell because you can't tell. It's not possible to tell. वेव के लिए कभी कोई पॉइंट डिफाइन नहीं किया जा सकता. वेव के लिए हमेशा एक रीजन डिफाइन किया जाता है. Is that clear? Fine. On the other hand, अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूँ, चाहे मैं कितना ही बड़ा पार्टिकल ले लूँ, चाहे मैं सन ले लूँ, चाहे मैं अर्थ ले लूँ, चाहे मैं मून ले लूँ, चाहे मैं एक पॉइंट ले लूँ या मैं बोर्ड ले लूँ या रूम ले लूँ, अपने आप को ले लूँ, every point, every mass, every matter can be defined by a single point. थोड़ा बहुत हमने फिजिक्स किया होगा, तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहला स्टार्ट होता है let's have a point mass. Even Earth is taken as a point mass as far as celestial calculations are concerned. किसी भी मैटर को आप ऐसा पॉइंट ले सकते हो. तो मैटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट. सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये दिख गया. वेव कैन नॉट हैव अ पॉइंट, इट हैज टू हैव अ रीजन. द पार्टिकल हैज अ पॉइंट.
ये डिफरेंस क्लियर हो गया. अब दूसरा डिफरेंस, एक बड़ी मजेदार सी चीज देखो. There is an antinode, then there is another antinode, and between the antinode there is a node. A wave moves from one position to the other without being in between. Can you imagine that I move from here to my house without opening the door or being without near to the wall ever? No. That's the problem with the particle. If a particle moves from one position to another, it has to be present at in between all the points for small or greater time, but it has to be present. It has to pass through all the positions. A wave doesn't need to. A wave could be here, a wave could be there, it might not be there in between. ठीक है? कई बार ऐसा लगता है कि सर ये दूसरा वेव तो नहीं हो सकता. Have you seen a tuning fork? Tuning fork देखा है? उस tuning fork के साथ ऐसा होता है कि हमारे पास एक tuning fork है, we strike it at some place and one arm starts vibrating. ठीक है? You strike one arm, but you would observe that the other arm is also vibrating. ठीक है? बीच में से आपने पकड़ रखा, you don't feel anything. यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ वाइब्रेट कर रहा है. स्ट्राइक आपने इसे किया था. वेव ट्रैवल्स फ्रॉम हियर टू हियर विदाउट बीइंग हियर. और अब आपको लगेगा नहीं ये तो झटका मार तो ये अलग वाइब्रेट कर रहा है, ये अलग वाइब्रेट कर रहा है. जस्ट होल्ड इट एंड दिस इज गोइंग टू फिनिश. एक को अगर पकड़ लोगे दूसरा बंद हो जाएगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेम वेव. एक और मजेदार बात, द वेव इज एक्जिस्टिंग एट 2 points at the same time. It's not existing in between. How is it possible that I exist here as well as at my home, but I am not running in between? I am here, I am there, I am not in between. A particle cannot exist as 2 places at the same time. The wave can exist as many places as it wants at the same time without being in between. ठीक है? समझ आया? 3 डिफरेंस क्लियर हो गए? एक और डिफरेंस. Heard of something called interference? Yeah. What is it? अब ये मत कहना कि मेरी मम्मी बहुत इंटरफेयर करती है. मैं उस इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा. No, interference is a phenomenon of light. Phenomenon of waves. Huh, of it. Okay, what does it tell? I don't know the exact definition. No, I don't need the exact definition. I Like, just know the meaning. I just read it in the book. Okay. Like, देखो, मैं इंटरफेरेंस की बात करता हूँ. इंटरफेरेंस as such is considered a negative word. Clear? ये बहुत इंटरफेयर करता है, इसकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है. But could you think that interference could be positive? it might be. An example? If someone's doing the wrong work and someone interferes, I guess that is a positive thing. But it's negative for the person whom you interfered. Yeah, there can be different perspectives. I'm talking about being a positive interference. Okay, fine. Let's talk about one example. आपको, let's say you have a younger brother or sister, and that younger brother or sister wakes you up in the morning 4 a.m. by pouring cold water on your face. ठंडा ठंडा पानी चेहरे पे डाल दिया, सुबह 4 बजे उठा दिया. What will be your reaction? I will be angry. No, you get up and give him a chocolate. Maybe I have somewhere to go and... You had your exam that day. Yeah. Was it interference or not? It was. Positive. Yeah. Okay. Today you are sitting here. Do you know why? Your mother interfered. Yeah. That is interference. Somehow we don't know the meaning of the word and we take it negative. Interference is to alter the course of anything by external means. In the same manner, when we talk about the waves, they also interfere with each other. And their interference can also be positive and negative. Let us say we have 2 waves. एक wave ऐसे चल रहा है and then there is another wave.
ऐसे चल रहा है. Both the waves are present in the same region. They have the similar energy, similar wavelengths. Okay. When they cross over at the same region, what happens is, if the crest and the crest meet, the trough and the trough meet, then in that case these two just pull and pull add हो जाता है, push add हो जाता है, and what we get is another resultant wave like this. The wave has increased in energy, the wave has increased in amplitude. If the wave has increased, if it is light, it increases in brightness, and if it is sound, it increases in loudness. Okay? This is positive interference of waves. Add. Okay? On the other hand, अगर wave हमारे पास ऐसे आ गया होता, the crust meets the trough meets the crest, so push and pull cancel each other, and then the wave is annihilated. मतलब ये light plus light becomes darkness, sound plus sound becomes silence. Can you imagine that? Sound plus sound becomes silence. Light plus light becomes darkness, but it happens. Heard of something called silencer of a car? What does it do? It does not have any padding from inside. It is simply a metal cylinder or metal shape. What does it do? It makes the sound bounce so that it's interference destructively. That's how silencer works. Is it clear? ठीक है. तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स है. अब यहाँ पर ये तो मैंने एक्सट्रीम केसेस लिया, कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव, बट इट कुड बी इंटरमीडिएट आल्सो. So there could be varying degree of brightness of light, and then varying loudness of sound. Interference की वजह से. Is it clear? There are certain experiments on interference of sound. अगर आप नेशनल साइंस में जाओगे उसमें जो प्रगति मैदान के पास है, तो वहाँ पे they have two speakers. They work at the same frequency, and when they say work at the same frequency, although the two speakers are giving continuous sound, you see the waves, sound going up and down, क्योंकि interfere कर रहे हैं. That's the nature of the waves, interfere. ठीक है. Now, think of interference of the particles. बड़ा मजेदार सा एग्जाम्पल है. Let us say there is an intersection. इस इंटरसेक्शन पर यहाँ से एक कार आ रही है, यहाँ से एक दूसरी कार आ रही है. The two are of the same make, same model, exactly identical. The two cars strike here, they vanish, and instead of two cars there is a truck. That truck travels for a certain distance, and after that one car moves in this direction, another car moves in this direction. Or the two cars strike right here, they both vanish, there is nothing. And then suddenly the two cars move from here. I think it's beyond science fiction even. I think that is somewhat like a wave. Is it possible? No. No. That's the nature of a particle. It cannot show interference. Waves show interference. Okay? And then there is something called diffraction. Heard of it? Yeah. What is it? Diffraction, I think, is something that... Don't think. Either you know it or you don't. Okay, then I don't. ये चक्कर नहीं हो. क्या है diffraction? Something that changes its path because of a thing that has happened. हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है. उस टॉर्च से हमने ऑन किया उसको. जब टॉर्च हम ऑन करते हैं तो हमें एक ब्राइट रीजन दिखाई देता है. उस ब्राइट रीजन के आसपास एक
कम ब्राइट रीजन भी होता है, ठीक है। वो कम ब्राइट रीजन क्यों आया? उसका रीजन ये होता है कि लेट्स से हमारे पास ये एक स्लिट है और यहां से लाइट मूव कर रही है, तो लाइट शुड बी फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। व्हाट वी फाइंड इज दैट लाइट रीचेस इन दिस रीजन एज वेल। Light travels in straight lines, so there should not be any light here. This region is geometrical shadow region. Geometrical shadow का मतलब है कि अगर straight line बना के देखा जाए तो this is a shadow, this should be a dark region. Light reaches there because it bends around the corners. The bending of the wave around the corner so that it reaches the geometrical shadow region is called diffraction. Now this diffraction again is dependent on wavelength. So diffraction can actually be used to separate the light according to the wavelength. जैसे हम प्रिज्म की बात करते हैं ना, वैसे ही हमारे पास एक diffraction grating होती है. The diffraction grating is also able to do the same thing as the prism. अगर आप चाहें तो घर पे एक diffraction grating बड़े आराम से बना सकते हो. उसका तरीका सीधा सी है, take a CD और DVD जो used up है, उसके पास एक plain portion होता है जहाँ से वो work करती है और दूसरा पीछे वो कोटेड पोर्शन होता है ना, कोटेड पोर्शन पे सेलो टेप लगाओ, खींच दो, 2-3 बार खींचोगे, यहाँ से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस नीट एंड क्लीन को ऐसे लाइट के सामने करो, यू आर गोइंग टू गेट अ स्पेक्ट्रम, दैट बिकम्स अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक। वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नाउ लेट अस कंसिडर अ बस टर्निंग अराउंड द कॉर्नर एंड सडनली द बस spreads. You can't even imagine it. That's happening with a wave. Okay? Diffraction and interference are the two properties which can be shown only by the waves. They cannot be shown by particles. Is that clear? ये बात समझ में आई? Now, how can the same thing be a wave and a particle? कोई common चीज़ है ना? And debroglie says that a particle is a wave as well as a particle. Now I believe you can understand what's the problem with this theory. Yeah. Putting together two things which aren't similar in any way. Like. In fact, two extremes. Yeah. हाँ वही बात है ना. Take South Pole and North Pole. नहीं, एक जोक चल रहा था इसमें. Have you seen that thing called शक्तिमान? थोड़ा सा सीरियल के बारे में पता है? बहुत पहले आता था. I just know that वो spin करता है एक ही जगह पे खड़े and then just vanishes. No, he doesn't vanish. He becomes something else. Okay. वो जोक था. अच्छा चलो. Heard of something called Superman? Yeah. उसका actual name क्या है? Clark Kent. Clark Kent and Superman are opposites of each other. Batman and Bruce Wayne are opposite of each other. Yeah. ठीक है? Peter Parker and Spider-Man are opposite of each other. And they are one thing. You can't imagine them to be same. Never thought about it. I also thought about it now only. They have made the characters such that ये और ये एक दूसरे से इतने different है that nobody can even imagine that they are same, but they are same. Is it not happening like this? Yes. The wave and particle are absolute opposite to each other and they are same. But वही बात है ना कि अगर कोई नहीं जानता वहाँ पे, जैसे हम उस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, हमें तो पता है खैर, because we are the spectators and we are the readers, observers. But if we imagine from the people living in that particular place, अगर कोई उनसे बोलता है क्लार्क कैंट यही सुपरमैन, तो पागल हो गया है. फिर कोई कहे नहीं मैंने देखा है, मैंने ये कहा, चल पागल हो गया क्या जा. Then बहुत ज़्यादा जब वो करेगा तो अच्छा ठीक है, तो ये प्रूफ कर कि ये दोनों सेम है, हम मान लेंगे. गिव अस अ प्रूफ.
इन द सेम मैनर जब हम इसकी बात करते हैं, पूरे डेरिवेशन की बात करते हैं, इस पूरे डेरिवेशन में तो कोई assumption नहीं है, ठीक है? इस पूरे डेरिवेशन के अंदर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन इज टू सिंपल. द क्वेश्चन इज देयर हैज टू बी अ मिस्टेक. हाउ कैन अ वेव बी अ पार्टिकल? ठीक है? The scientists were not able to prove any mistake in this calculation. अगर वो ये कहते हैं कि ये इक्वेशन गलत है तो that would be saying प्लैंक और आइंस्टाइन गलत है. डी ब्रॉग्ली गलत नहीं है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है. Planck and Einstein are wrong, and who's gonna dare go against these two people? तो आप लोगों ने बड़ी मजेदार सी बात की. अच्छा, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ. You perfectly know energy is conserved. Energy can neither be created nor destroyed. Okay, fine. Let us we take a piece of paper and take an isolated system. उसके अंदर हम piece of paper रखते हैं and we burn. जितनी भी energy we don't allow it to escape. Now, is it possible that this paper, after burning, reconverts into paper? No. Why is it not possible? Because it changed its form. Agreed, it can change again. बोलो. Why can't it change? चलो एक और उससे भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उससे भी बहुत छोटा सा. ये चौक का पीस है. जब इस चौक के पीस को तोड़ा तो आई हैव टू सप्लाई सम एनर्जी. ठीक है? एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो अगर मैं इस चौक के पीस को जोड़ूंगा तो आई शुड बी गेटिंग बैक दैट एनर्जी जो मैंने इसको प्रोवाइड की थी. You should be. And the chalk piece should join together. करना जरा join. Law of conservation of energy तो है. It should hold true. Problem क्या है? No. You know, Like, I'm not able to explain it. forget about explaining. ये हो नहीं सकता है. ये हो नहीं सकता है. मुझे पता है ये नहीं हो सकता, पर क्यों नहीं हो सकता? गलती क्या है इसमें? कंसेप्ट में क्या गड़बड़ है? Must be something wrong with the concept because it doesn't happen. Even if you don't know what's wrong with the concept. Maybe. Maybe. Don't say maybe. Science doesn't work with maybe. Whether it is there or it is not there. ठीक है? तो ये concept आपके सामने it doesn't work. Something wrong with the concept. The only thing is, either we are not applying the proper condition, or we don't know the concept. Why is it not happening? Clear? But we perfectly know it doesn't happen. In the same manner, at that time, the scientists said, wave and particle are different. They can't be same. Maybe we don't know the concept why they are not same. But they are not same. डी ब्रॉग्ली ने ऐसे प्रूव कर जैसे मैंने अभी एक आगे जुड़ जाना चाहिए. तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप ये कहना चाहते कोई बच्चा, अब जैसे मान लीजिए आप तो चलो इंटेलिजेंट हो, आप बड़े हो और आपके दिमाग में क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा जैसे कि मेरा बेटा है, ही इज इन 7th क्लास, मेरी बेटी है 9th क्लास में, अगर वो ये कंसेप्ट उठा के मेरे पास ले आया कि पापा आप ये हमने आज पढ़ा था एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, तो यहाँ पे जब हमने इसको तोड़ा ये वापस जुड़ क्यों नहीं रहा? हमने इसको एनर्जी दी है तो हमें वापस मिल जानी चाहिए.
मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसका आंसर पता है ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे पता है, मैं आपको भी अभी नहीं बता पा सकता इसका आंसर, और उनको भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो कंसेप्ट इसके लिए रिक्वायर्ड है वो आपने नहीं पढ़ा। मैं कहूँगा बेटे ऐसा नहीं होता। पापा क्यों नहीं होता? मैंने कहा बेटा देखो, अगर ऐसा होता तो होता ना, एक काम करो, कोई चीज तोड़ो और उसको वापस जोड़ दो, अगर जुड़ गई बढ़िया है, अगर नहीं जुड़ी तो अभी फिलहाल ये मान लो कि ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपके सामने कर दिया ऐसा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने debroglie से कहा कि भैया ऐसा है, आपके पास आपने ये पूरा का पूरा थ्योरी प्रूव की, बहुत अच्छी है, स्मार्ट है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, वी अप्रिशिएट दैट, बट डोंट कंसिडर इट टू बी ट्रू बिकॉज इट कांट बी ट्रू। Clear? And if you want it to be proved true, then in that case, just take a particle and measure its wavelength. Measure, not calculate. We should be able to see that this is the wavelength of the particle. If you do it, you will accept it. If you don't, forget it. Easy, straightforward. Okay. Now debroglie answered that I am a theoretical physicist. I am not an experimental physicist. I am not going to do the experiment. Somebody else has to do it. बड़ा अच्छा आइडिया, मैं क्या करूँ, मैं तो बता दिया आपको कंसेप्ट, आप संभालते रहो। And then there were certain other people, and the people they thought, okay fine, we are going to prove it. अब इससे पहले कि हम लोगों पे चले, let's talk about another person whose name was Bragg. What Bragg did was he talked about the diffraction of X-rays. X-rays? Wavelength, light. ठीक है? जब उसने X-rays के diffraction की बात की, तो उसने कहा, देखो, यहाँ पे जब light bend होती है diffraction के through, then in that case the light waves can interfere as well. तो with diffraction और interference दोनों के साथ एक diffraction pattern मिल जाता है, ठीक है? और diffraction pattern इस तरीके से मिलता है कि अगर मान लीजिए हम X-rays लेते हैं, यहाँ से X-rays आ रही है, स्क्रीन है, तो they go like this, they are going to have a bright spot here, and around that bright spot there would be another bright ring, another bright ring, another bright ring, another bright ring, and in between these bright rings certain dark regions would be there. मतलब it won't be a continuity. This is diffraction and interference both. These rings are termed as 1, 2, 3, 4, 5, n. ठीक है? यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, this is theta. n फोर्थ के लिए थीटा है, n 3 के लिए कुछ और थीटा होगा, 2 के लिए कुछ और थीटा होगा, 1 के लिए कुछ और थीटा होगा, ठीक है? ये जो यहाँ पर जो स्लिट है, जिसके थ्रू ये डिफ्रैक्ट हो रहा है, इसकी जो विड्थ है, that is d. ठीक है? And the wavelength of light is lambda. Okay. Now Bragg suggested an equation, the diffraction of X-rays. He said n lambda is equal to 2d sine theta. Now we are not going to go into that derivation of this equation. Bragg got the Nobel Prize for derivation of this equation, so मैं वो Nobel Prize नहीं लेने वाला। तो यहाँ पर this is the equation that he gave, from which theta and n they will be derived from the experiment. सीधा experiment से काउंट हो जाएगा, वो बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। If you know lambda, you can calculate d, and if you know d, you can calculate lambda. Now this is diffraction of a wave, interference diffraction of a wave. Is it clear? ठीक है? तो that was the equation. अब ये जो चीज है ना, why did he get the Nobel Prize? Nobel Prize is not given by the efforts that you do. Efforts से Nobel Prize नहीं मिलता. Nobel Prize मिलता है कि जो आपने चीज की है उसका यूज क्या है. Now what this use is, जो इस diffraction की खास बात ये होती है कि it is applicable, it is possible only when the wavelength and d are matching each other. They are at some factor of each other. अगर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा. जो एक्सरेज की वेवलेंथ है, that matches
the interatomic distance in a molecule in a substance. अगर मान लीजिए मैं एक सब्सटेंस की शीट ले लेता हूँ, जैसे मेटल की मैंने शीट ले ली और उसके थ्रू एक्सरेज पास करता हूँ, तो डिफ्रैक्शन के थ्रू मैं इंटर पार्टिकल स्पेसिंग बता सकता हूँ. I'll be able to tell the bond lengths. In the same manner, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को मैंने सामने रखा, उसके थ्रू एक्सरेज पास की, तो it is going to give the relative position of different particles. I can just rotate the molecule and I can have different relative position. अगर different position का diffraction pattern मैं कंप्यूटर में फीड कर दूँ, तो कंप्यूटर would be able to create the structure. जितने भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आपको पता है, जितने भी आप बॉन्ड लेंथ्स की बात करते हैं, जितनी भी चीजों की बात करते हैं, वो सारे के सारे इस एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न से निकलता है. So that is the use of X-ray diffraction pattern. Clear? So this is very useful. So this was given by Bragg, and that is how he got the Nobel Prize. अब यहाँ पर किया क्या? There were two people whose name was Davison and Germer. Davison was the person who was in charge of the laboratory, and Germer was his assistant. So what they thought was that we are going to do an experiment to prove whether the particle is a wave or not. Interference and diffraction are the properties shown only by the waves. They are not shown by particles. जैसे कि मैंने आपको बोला ना, दो कार टकराई और इंटरफेयर करके ट्रक बन गई और निकल गई, या फिर कार टकराई गायब हो गई, निकल गई. तो अगर ये मैं प्रूव कर दूं कि कार ऐसा करती हैं, तो I would be able to prove that they are waves. So that's what they thought, that we are going to take a particle and see whether it shows diffraction and interference or not. And if it does, it is proved that it's a wave. If it doesn't, it is proved it's not. Clear? उन्होंने क्या किया, डेविसन एंड जर्मर ने एक इलेक्ट्रॉन लिया. इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल लिया. अब इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? क्योंकि जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे m डिनोमिनेटर में है. m जितना छोटा होता चला जाएगा, लैम्डा उतना बड़ा होता चला जाएगा, उसको डिटेक्ट करना उतना पॉसिबल होता चला जाएगा. क्लियर? अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, व्हाई नॉट v? v को भी तो कम कर सकते हैं. v को तो कम करना m को कम करने से ज्यादा इजी है. द प्रॉब्लम इज कि अगर v को कम कर दिया तो वो रिलेटिविस्टिक पार्ट खत्म हो जाएगा. v actually cannot be reduced. It has to be more than 90% of light. So that it is actually having a relativistic part. ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो मेरी वेवलेंथ कोई इंफिनिटी थोड़ी ना है. मेरी तो वेवलेंथ ही नहीं है. Reason I am at rest. I don't have a relativistic motion. ठीक है? Uncomfortable है. ठीक है? ओके? तो उन्होंने क्या किया, दे टुक कैथोड रेज. पढ़ा है आपने कैथोड रेज के बारे में? ठीक है? कैथोड रेज लेकर उन्होंने उनको एक्सेलरेट किया. अब कैथोड रेज आर नेगेटिव पार्टिकल्स. तो नेगेटिव पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड बाय पुटिंग पॉजिटिव फील्ड. तो दे पुट पॉजिटिव फील्ड्स इन द पाथ ऑफ एक्स-रेज. यहाँ पे उन्होंने एक्स-रेज लिया. ठीक है? यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड्स लगा दी. इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, took it to the speed of 90% of light. अब ये करने से पहले उन्होंने क्या किया, एक निकल शीट ली, निकल फॉइल ली, निकल क्रिस्टल बोलते हैं उसको. Put it in path of X-rays, got the diffraction pattern, and from that they calculated out D. They knew the lambda of the X-rays, got the D. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, moving at the speed of 90% of light, जब उनकी उन्होंने वेवलेंथ debroglie की इक्वेशन से कैलकुलेट की, the wavelength came out to be very similar to X-rays, calculation wise. ठीक है? So they just said कि if the wavelength of X-rays and electrons turn out to be same, then the diffraction pattern of electrons and X-rays, if it exists, should be same. Diffraction depends on wavelength. तो अगर दोनों की wavelength same है तो उसका diffraction pattern भी same होना चाहिए. So what they did was, they took it, did it, यहाँ पे किया, X-rays से उन्होंने refraction pattern निकाला. फिर इस X-ray की source की जगह they put the cathode ray source, had the same
thing repeated. यहाँ पर उन्होंने nickel foil लगा दी. What could be the result of this reaction, this experiment? One, they could get the diffraction pattern. If they got the diffraction pattern, it would prove that electron is a wave. And from the diffraction pattern, they could measure the wavelength. If they could measure the wavelength, then in that case, it would be also clear that whether this equation is correct or not. अब ये जरूरी नहीं है कि अगर वेवलेंथ उसकी है, अगर वो वेव है तो वो डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉलो करेगा, हो सकता है कोई और फॉलो करे. तो दोनों चीजें एक बार में क्लियर हो जाएगी. एंड इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्टेन्ड, खत्म हो गई बात, ये बकवास थी. Now, they did this experiment, and the shocking part was they got a diffraction pattern. It was proved electron is a wave. Wave. Particle तो पहले prove हो गया. Electron is a particle, we know that. This experiment tells it's a wave. Please understand, हमारे पास ऐसा कोई experiment नहीं है जो wave और particle को एक साथ दिखा दे. हम एक बार में एक characteristic observe कर पाते हैं, होती दोनों characteristic है. Experiment की problem नहीं है, particle की problem नहीं है. Clear? Now, so that is proved. Electron is a wave. अब उस electron is a wave के बाद एक और problem आई. यहाँ से lambda measure हो गया. Diffraction pattern आ गया. अब pattern से lambda measure हो गया, calculate नहीं. Measure किया. It agreed beautifully with the lambda obtained from de Broglie's equation. Proved de Broglie's equation is correct. अब कई बार ऐसा होता था कि मान लो कोई चीज तुमने तोड़ी, उसको फिर से जोड़ दिया, वो जुड़ गई. ये देखो जुड़ गई, आपने कहा जुड़ गई, मेरा फ्लूक हो गया, चल इसको जोड़ के दिखा. होता है ना, कुछ चीजें जुड़ भी जाती हैं. ठीक है, तो इसे जोड़ के दिखा, तो उस तरीके से उन्होंने कहा भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए फ्लूक हो गया, कोई और पार्टिकल दिखाओ. भाई लोगों ने कहा ओके फाइन, न्यूट्रॉन्स. अगेन डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, प्रोटॉन्स पॉजिटिव दोनों, उसका भी आ गया. अल्फा पार्टिकल्स heavier than neutrons, protons, mass is 4. उनका भी आ गया. और heavy, heard of something called Buckminster fullerenes? C60. उसका भी आ गया. Proved that particle has a wave and a particle nature. समझ आई थी बात? That was de Broglie. हो गया शॉक. Up, there were two people who got the 1937 Physics Nobel Prize for electron diffraction of crystals. One of them was Davison. Can you imagine who was the second one? German नहीं था. De Broglie. You can't even imagine. He was Thomson. J.J. Thomson. नहीं, G.P. Thomson. But एक irony of physics की, one of the Thomson got the Nobel Prize to prove that electron was a particle. He found the mass and the charge of the electron. He proved it to be a particle. ठीक है? Another Thomson got the Nobel Prize to prove that electron was a wave. And the biggest irony is, G.P. Thomson was the son of J.J. Thomson. कहते हैं वो बात है ना, इलेक्ट्रॉन तुम वेव बोलो चाहे पार्टिकल, रहोगे तो हमारे ही पास. Family affair. ठीक है. So that was the property of electron. The G.P. Thomson got the Nobel Prize to prove the electron to be a wave. Father got the Nobel Prize to prove that electron was a particle. So electron is a wave as well as particle. And we have so many things based on the wave nature of electron. Heard of something called electron microscope? Depends on the wave nature of electron. Is it clear? अब बड़ी लंबी चौड़ी दिक्कत आ गई. वो लंबी चौड़ी दिक्कत ये आई कि बोहर ने तो ये कहा था इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल.
It is revolving around the nucleus in a fixed orbit. That was Bohr's theory. अब क्या करें? अब लोग ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट से कुछ चीजें प्रूव कर देते हैं. अब जैसे कि किसी ने कहा, ओके फाइन, हम मान लेते हैं that the electron is a wave. So how does it make a difference? Electron wave है तो है. अच्छा, let us say that electron revolves around the nucleus as a wave. Now this electron is going to be a standing wave because this path is a closed path. Traveling wave closed path में नहीं हो सकता. So here it would be something like this. ठीक है? And the trick about it is that this entire path has to be an integral multiple of the wavelength. Otherwise, the nodes are not going to remain fixed. They are going to move. Moving wave बन जाएगा. अगर ये moving wave बन गया, तो wave अपने आप को annihilate कर देगा. अगर ये नहीं बना, तो this equation should be true that 2 pi r is equal to n lambda. Integral multiple of wavelength 2 pi r is the circumference. तभी तो ये सही होगा. अब अगर ये सही है तो लैम्डा की वैल्यू दोनों उठा के डाल दी यहाँ से. debroglie सही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो 2 pi r becomes equal to nh by mv and a slight jugglery and you get nh by 2 pi is equal to mvr. The Bohr's postulate. So they proved Bohr's postulate by the theory which was supposed to destroy Bohr's model. मजेदार सी चीज है. Clear? अब अगर मैं इसकी बात करूं MVR की, this becomes a peculiar thing. ये कैसे हो गया? अब ये जो डेरिवेशन सामने लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है. Absolutely wrong, इसमें कुछ भी सही नहीं है. क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये assume कर लिया कि n is the number of waves in a particular orbit as well as the orbit number. यहाँ पे orbit number है और यहाँ पे number of waves है. हमने ये मान लिया कि दोनों सेम है. ये मान लिया. वैसे ही बोर की थ्योरी में हर चीज मानी गई थी. ये भी मान लिया तो कौन सी बड़ी बात है. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है. इसके क्वेश्चन बड़े प्यारे बनते हैं. तो अभी तक हम सारा का सारा थ्योरी कर रहे हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक, लिखो. The radius of the first orbit of an atom is x. The radius of the first Orbit of an atom is x. ठीक है, full stop. Calculate the wavelength of electron in the third orbit. Solve it. सबसे पहली चीज, आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया गया. डोंट यू हैव टू फाइंड द ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट फर्स्ट? याद है इक्वेशन?
बोहर की इक्वेशन, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकालोगे? फर्स्ट का दिया होगा तो मुझे याद नहीं। Rn is equal to R naught n square by z, ये इक्वेशन की है। Finished. तो Rn will be equal to R naught by z into n square. Clear? R1 is R naught by z. n to 1 हो गया. Now this is given as x. So R3 will be equal to R naught by z into 3 square. That is equal to 9x. ठीक है, R की जगह ये डालो, आंसर आ जाएगा। That's the wavelength of the electron in the third orbit. ठीक है, अब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा। They can say calculate the, जैसे मैंने अभी इक्वेशन दिया है क्वेश्चन, according to Bohr's and debroglie's theory. ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, इस क्वेश्चन में कुछ भी सही नहीं है, बट ये क्वेश्चन है। ओके, अब ये दिक्कत आ गई। अच्छा, डीब्रॉगली ने एक बहुत बढ़िया काम किया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। कैलकुलेट द वेलोसिटी of an electron in the nucleus of diameter 10 raised to power minus 14 meters. निकाल दो इससे, इधर इससे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? If the electron is in the nucleus, it has to, वही एक confined space हो गई, तो उसकी wavelength न्यूक्लियस के डायमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो लैम्डा आपको दे रखा है मैंने, m is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, v आपको कैलकुलेट करना है। Can you give me an approximate value of it? फटाफट करो, जो राउंड ऑफ करना कर डालो। नाइन पॉइंट वन को 10 ले लो, 6.626 को भी 10 ले लो। पता है मुझे राउंड ऑफ कर रहे हैं, आई जस्ट नीड द पावर्स। इन दोनों को कैंसिल कर दिया, पावर्स कितनी आएंगी? The velocity of the electron turns out to be 10 raised to power 11 meters per second. That is 1000 times the speed of light. Can we have the speed 1000 times the speed of light? Can we have the electron in the nucleus? According to this, no. Perfect. So this was the first theory which said that electron cannot exist in the nucleus because if it exists, its velocity would be very high, more than the speed of light. And if it has to be less than the speed of light, then in that case it's going to have the wavelength greater than the diameter of the nucleus. And if it is more than the diameter of the nucleus, how can you put a big particle in a small space?
So that proved why the electron cannot be in the nucleus. बोहर की थ्योरी में ये प्रूफ नहीं था. ठीक है. तो अब यहाँ पे वो स्पाइरलिंग वायरलिंग का चक्कर ही खत्म हो गया, स्टेबिलिटी का चक्कर ही खत्म हो गया. वेव है, वो इस रीजन में आ ही नहीं सकता, वो कैसे सकता है? That was debroglie. ठीक है. कुछ पूछना है अब तक यहाँ पे? Absolutely. Okay. Having talked about this, now we get along with something called the Heisenberg. ठीक है. अब ये ना बड़ा confusion हो गया, आपके लिए भी confusion हो गया, हमारे लिए भी confusion हो गया कि यार ये बोहर की थ्योरी सही है या गलत है. So there was another scientist whose name was Heisenberg. What he said was that okay fine, let's do an experiment to find out whether NH by 2 pi is equal to mvr or not. And how do we do that? बहुत सिंपल सा तरीका था. उसने कहा कि यहाँ पे h is a constant, 2 pi is a constant, n is an integer, m is a constant, v and r यानी ये कह लो कि mv momentum and radius. अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली ये निकाल लेता हूँ, then in that case I'll be able to know whether it is equal to NH by 2 pi or not, and that would be the final thing. कोई दिक्कत ही नहीं होगी. ठीक है. अब mv मोमेंटम है, r रेडियस है. रेडियस का मतलब ये है कि it is the position of the electron with respect to the nucleus. That is what the radius is. ठीक है. mv मोमेंटम है. अब उन्होंने सोचा कि कैसे निकाला जाए इसे. अब इसे निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका उन्होंने लिया कि let's say we have an electron here, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है. ठीक है. We allow the gamma radiation to fall on it. जब gamma radiation इससे टकराएंगी तो they are going to get deflected. We will be able to detect वो कहाँ से आ रही है. साथ ही साथ यहाँ से भी टकरा के वापस आएंगे तो हमें न्यूक्लियस की पोजीशन मिल जाएगी. तो we will be able to get the position of the electron with respect to the nucleus. कोई दिक्कत नहीं है. अब उसके बाद what we are going to do is कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो at a certain time we will be able to get its new position. So we will be able to get the velocity of the electron, we will be able to get the momentum of the electron, we have got the radius of the electron, so we will be able to get mvr, and we will be able to find whether it is equal to nh by 2 pi or not. A simple expression. ठीक है. कोई दिक्कत इस एक्सपेरिमेंट में? बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा. पर थोड़ी सी दिक्कत है. वो छोटी सी दिक्कत ये है कि इस रूम के अंदर आपने अभी भी देखा है मच्छर भाग रहा है, बड़ी देर से तंग कर रहा है. ठीक है. लेट अस से हम इस रूम की लाइट बंद कर देते हैं और आपको दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं विद लॉट मेनी फुटबॉल्स, फुटबॉल के साथ. ठीक है. और यहां पर हम पीछे डिटेक्टर्स लगा देते हैं कि फुटबॉल जब भी उनसे टकराएगी तो उसकी पोजीशन मिल जाएगी. ठीक है. आपको फुटबॉल दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आपको उस फुटबॉल को फेंकना है. वो फुटबॉल इस मच्छर से टकराएगी. जब फुटबॉल मच्छर से टकराएगी तो फुटबॉल इज गोइंग टू गेट डिफ्लेक्टेड, और डिफ्लेक्ट होने के बाद वो दीवार से टकराएगी. तो वी विल गेट द पोजीशन ऑफ द फुटबॉल. यहां से आपको पता है कि आपने किस डायरेक्शन में फुटबॉल फेंकी थी. वहां पे आपको फुटबॉल का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा और उस डिफ्लेक्शन ऑफ द फुटबॉल से आपको ये पता करना है कि मच्छर की पोजीशन क्या थी. एंड आप जब दूसरी फुटबॉल फेंकोगे तो दूसरी फुटबॉल जब टकराएगी मच्छर से और डिफ्लेक्ट होगी तो आपको ये बताना है कि मच्छर की वेलोसिटी क्या थी. Why is it not possible? First of all, in respect to the situation, mosquito is very extremely small in comparison to the football. उससे प्रॉब्लम क्या है? वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही. चलो मान लिया डिफ्लेक्ट हो गई. हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत सेंसिटिव है. It's not like we don't know in which. ओके चलो फुटबॉल नहीं फेंकते, बैलून फेंक देते हैं. तब It's still not possible. I think that it's not possible don't because. think. Just give me a reason why is it not possible. Because
we don't know in which direction We or don't need in to. which. We are going to put it random. बहुत सारी फुटबॉल फेंकेंगे. But we don't know about the mosquito. What we don't know? Mosquito. But like the mosquito doesn't have a fixed path, so we don't know that कि वो like it's It covered. doesn't have to have a fixed path. हम फुटबॉल रैंडमली मारे चले जा रहे हैं, बहुत सारी फुटबॉल मार रहे हैं, तो हमें मॉस्किटो की पोजीशन एट ईच इंस्टेंट मिल रही है. ईच इंस्टेंट मिल रही है, तो इट डजंट हैव टू हैव अ रेगुलर पाथ. प्रॉब्लम क्या है? बट स्टिल यू बिलीव की प्रॉब्लम है. ये अजीब बात है भाई, प्रॉब्लम दिखती है लेकिन प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? दो प्रॉब्लम्स, एक नहीं दो. पहली प्रॉब्लम, as you said, the size of the football is much bigger than the mosquito, and it's bigger not only by mass. आप मास के चक्कर में पड़ जाते. मास तो है, ठीक है, लेकिन बिगर देन द मॉस्किटो का मतलब ये है कि जब इतनी बड़ी फुटबॉल को आप मच्छर पे फेंक के मारोगे तो इतने बड़े रीजन में मच्छर कहीं पर भी होगा, तो फुटबॉल विल बी डिफ्लेक्टेड. आपको ये कैसे पता चलेगा मच्छर इस रीजन में कहाँ था? क्लियर? तो irrespective of whatever you might do, because of the size of the football, there is an error in the measurement of position. बता ही नहीं पाओगे कि मच्छर कहाँ है, क्योंकि इतने रीजन में, अब इतने रीजन का एरर तो आएगा ही आएगा. That is the inbuilt error in the method of experiment. Is it clear? पहली चीज, ठीक है. दूसरा, फुटबॉल का मास है. क्लियर? अब अगर फुटबॉल मच्छर से टकरा के डिफ्लेक्ट होती है तो उसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है. अगर उसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो क्या मच्छर का मोमेंटम चेंज नहीं होगा? फुटबॉल टकराई, मोमेंटम चेंज हो गया. अब मोमेंटम चेंज दो तरीके से, डायरेक्शन का चेंज एंड वेलोसिटी का चेंज. क्लियर? अब उस डायरेक्शन के चेंज की वजह से और वेलोसिटी के चेंज की वजह से मोमेंटम में चेंज आया. अब मच्छर के मोमेंटम में चेंज कितना वेलोसिटी और कितना डायरेक्शन हमें क्या पता? मच्छर का मोमेंटम भी चेंज हो गया, इसका बॉल का भी चेंज हो गया. दोनों हैं तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन और वेलोसिटी समझ में नहीं आ रही. क्लियर? अब जब दोबारा आप मच्छर की पोजीशन निकालोगे तो अब तो मोमेंटम उसका चेंज हो चुका है. क्या निकाला आपने मोमेंटम में? तो मोमेंटम भी गलत आया आपके पास, पोजीशन भी गलत आई. तो इनफैक्ट यू कैन नेवर गिव द एग्जैक्ट पोजीशन और द मोमेंटम of the mosquito using this method. दे ही नहीं सकते. क्लियर? अब दिक्कत पता है क्या है? गामा रेडिएशंस have a huge particle nature. They have an extremely low wavelength. They have an extremely high frequency. They have an extremely high energy. So they behave as particles. So when these particles strike electron again is a particle. Particle then striking a particle, it is going to get deflected. Its momentum is changing. The momentum of electron also will change. अब गामा रेडिएशन के अंदर वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा, because these are रेडिएशन की वेलोसिटी एक ही होती है. But it's going to change its wavelength. The change in wavelength of the gamma radiation deflected from electron is termed Compton effect. Now this Compton effect is another proof of particle nature of light. ठीक है? क्योंकि पार्टिकल से टकराने के बाद ही मोमेंटम चेंज कर सकता है. ठीक है? So that is what we term as the Compton effect. अब गामा रेडिएशन का मोमेंटम तो चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन का भी चेंज हो गया. अब इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन निकालेंगे, क्या मोमेंटम निकालेंगे? गया. अब दिक्कत ये है कि गामा रेडिएशन की वेवलेंथ माना बहुत छोटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटी नहीं है. लाइट की एक प्रॉब्लम है,
अब जैसे कि हमने फुटबॉल के प्रॉब्लम की बात की थी, फुटबॉल का साइज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो लाइट की एक प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल हैविंग द साइज लेस देन हाफ इट्स वेवलेंथ। हो ही नहीं सकता। अभी तो वही बात है ना कि छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं मच्छर की बात लूं, छोटा सा एग्जांपल ये है कि लेट्स से ये मच्छर यहां पे उड़ रहा है, अब इरिटेट तो कर ही रहा है, अब मेरा आया यहां पे पकड़ में आया, आई सिंपली बैंग इट, मच्छर नहीं दिख रहा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस हाथ के नीचे मच्छर कहां पर है? Can you tell? No. Why not? The size of the mosquito is much smaller as compared to my hand. ठीक है, तो इसके नीचे वो कहीं पर भी हो सकता है, पर आपको ये पता है इसके अंदर है। Now this region is the uncertainty in position of the mosquito. Uncertainty word का मतलब समझ में आया? ये है uncertainty. That is the minimum uncertainty. इससे कम uncertainty हो नहीं सकती। Is it okay? Same is with the electron. You can't exactly tell its position. You can't exactly tell its momentum. Clear? And from there, Heisenberg gave his Heisenberg's uncertainty principle. He simply said that the exact position or momentum of any subatomic particle can never be determined. It can never be determined. ठीक है? The minimum value of the product of uncertainty in position and momentum of any particle is h by 4 pi. मतलब कि उसने जो इक्वेशन दी, that was delta p, that was uncertainty in momentum, multiplied by delta x, which was uncertainty in position, will always be greater and at the minimum equal to h by 4 pi. ठीक है, अब अगर मैं इस h की बात करता हूं तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है 4 pi। अच्छा, बोहर ने h by 2 pi की बात की थी, ठीक है, तो समटाइम्स ये h by 2 pi जो है ना, this is written as Bohr's constant and it is written as h cross. This is written as h cross. अब अगर मैं h cross की बात करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं greater than equal to h cross by 2. Please don't get confused. ये cross misprint नहीं है. This is simple. Is it clear? तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. Now this is what we have as Heisenberg's uncertainty principle. अब एक बड़ी मजेदार बात. When this chapter was started, what was the target of this chapter? Studying the atomic, like the structure of an atom. Okay. What does structure of atom mean? What are we trying to find? Where the neutrons, the protons. We know where the neutrons and protons are. Position and. We know that. वो nucleus है. So what are we trying to find? Their characteristics. We are trying to find the position of electron throughout. Nobody Nobody had any problem with the position of proton and neutron. हाँ, because they were inside the nucleus. So वो तो पता ही था. The only problem was position of electron. ठीक है. We started this chapter with we do not know where the electron is. And now, do you know what we have come to know? We do not know where the electron is. We can not know where the electron is. Okay? So we are happy now. Now we know that what we didn't know, why we didn't know. Yeah. Clear? We have understood that what we didn't know, we didn't know that because it cannot be known. What a great deal.
जो हमें पता नहीं था वो हमें पता है कि वो हमें पता क्यों नहीं था, वो हमें इसलिए पता नहीं था क्योंकि वो पता ही नहीं किया जा सकता। That's what Heisenberg uncertainty principle tells us. You cannot know the exact position. हाँ, Heisenberg uncertainty principle के कुछ और छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये भी हमें ये बता देता है why the electron cannot exist in the nucleus. What we can simply do is, हमने वो इक्वेशन सामने लिखी हुई है, we'll consider the minimum uncertainty. We'll take the delta x as the radius, the diameter of the nucleus, and mass of the electron, and we are going to find the error in the velocity of electron. If we find that error in the velocity of electron delta v, it will again turn out to be greater than the speed of light. Now that is the error. If error is greater than the speed of light, what would be the speed itself? Okay? On the other hand, if we try to find out the uncertainty in any of the macroscopic particles, किसी भी बड़े पार्टिकल की बात करेंगे, तो अगर हम एक चीज को जितना मर्जी एक्यूरेट कर लें, दूसरी चीज का एरर भी नेग्लिजिबल आएगा. So Heisenberg uncertainty principle theoretically is valid for all particles, but it is significant only for subatomic particles, because for the macroscopic particles, the error is so small that it is considered accurate. That error is much smaller than the least count of our most accurate instruments. ठीक है? तो that is not an error. ठीक है? इसके वो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर, I believe you can do it. कोई दिक्कत नहीं. That was Heisenberg uncertainty principle. यहाँ तक कुछ पूछना है? Sure. Okay. Now, having talked about that Heisenberg's uncertainty principle, ओवर तो नहीं हो गया लिमिट से? नहीं. आगे चल सकते हैं? हाँ. Okay. Now we need to have an equation which is able to give us both things. That is, which is able to include the wave nature as well as particle nature of electron. And now we start over with the most hated creature in physical chemistry. आपको इस creature के बारे में नहीं पता, आपको एक ही creature अभी तक पता है, and that was Newton, Isaac Newton. Isaac Newton is the most hated creature in 11th and 12th. Don't you hate him? I find him a robber more. हाँ, like उसने खुद कुछ नहीं किया, he just took नहीं इस बात के पुराने. अरे वो नहीं, उसकी चोरी की वजह से हेट नहीं करते. वैसे भी बहुत irritating है. हाँ, वैसे क्यों irritating है? तुम ज़्यादा ही काम कर दिया. उससे ज़्यादा भी आपको पता उसने क्या क्या किया न्यूटन ने? एक तो लॉज ऑफ मोशन दिए, और एक और चीज़ थी. आपको जानकर बड़ी तकलीफ होगी. 50% of your 12th class syllabus, known as calculus, was invented by Newton. And that entire big calculus was invented just to prove the 3 equations of motion. उसने तो 3 equation prove कर दी. हमारा बैंड बचा. तो Newton is the most hated creature in 11th and 12th. Beyond 11th and 12th, when we move on to BSc and MSc, Schrodinger is the most hated creature. तो आप कंपैरिजन समझ सकते हो कि इसने क्या किया, क्या बदतमीजी की होगी. खैर, श्रोडिंगर की बदतमीजियों से शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं. ठीक है, we are going to talk about the Schrodinger equation. पर उससे पहले कुछ very important questions. Can you tell me the value of 4 plus 4? 8. पता है आपको? Very good. About 2 multiplied by 4. 8. Maybe 8. Okay. Something like 16 divided by 2. Or something like 10 minus 2
or something like 2 raised to power 3, or something like under root 64. All of it. Alright, good. आपको तो कैलकुलेशन आता है. Fine enough. ये क्वेश्चन नहीं था. क्वेश्चन ये है, ये क्या है? Four में you're adding 4. What is this? बीच में जो लिखा हुआ है. It's a symbol. What does it do? It shows how. It shows. What does it show? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा इससे. Okay, taken as something which shows you that something What is does being it added show? to. What does it show? That 4 is being added to 4. How do you know that? That it is showing this. I've been taught like that. Okay, you have been taught like that. वही बात है ना कि हमें ऐसे ट्रेन किया गया है, like एक डॉग को ट्रेन किया गया कि जब घंटी बजेगी तो वो खाना मिलेगा, Yeah. या जब घंटी बजेगी तो वो वहां जाना है. तो हमें ऐसा ट्रेन किया गया है कि जब भी ये सिंबल दिखे तो आपको ये करना है. Clear? Do you know the meaning of this symbol? Meaning? अभी तो आपने बताया. पक्का पता है ना? आपको एक मजेदार बात पता है? You have been taught this symbol. Hello? हाँ जी. Exact 8 बजे. Exact. Okay. Okay. Now, मैं आपको एक बात बता रहा था कि if we talk about this particular symbol, do you know, since the very beginning of mathematics in your life, maybe शायद आपको सेकंड में मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया होगा प्लस में, सबसे पहले यही सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ था. You are being taught the meaning of this symbol every year. हर बार आपको इस सिंबल का मतलब बताया जाता है. पक्का? Sure? Yeah. कैसे? लेकिन some or the other people actually remind you. जैसे second में आपने ये किया था. नहीं, रिमाइंड की बात नहीं है. आपको एक नया मीनिंग बताया जाता है हर साल. सबसे पहले आपको बताया गया द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 + 2 क्या होता है. फिर आपको बताया गया एडिशन ऑफ होल नंबर्स कि 2 + 0 क्या होता है. फिर आपको बताया गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि 2 + -2 क्या होता है. फिर आपको बताया गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, रैशनल नंबर्स. फिर आपको बताया गया एडिशन ऑफ वेरिएबल्स. फिर आपको बताया गया एडिशन ऑफ इरैशनल नंबर्स. ठीक है. अभी 11th क्लास में आपको शायद बताया जाएगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फिर उसके बाद आपको बताया गया एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. और एक मजेदार बात यह है कि इफ यू नो द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यू वोंट बी एबल टू डू द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. They are two different things. So what does this symbol actually tell you? Frankly speaking, the symbol simply refers you to a book called addition. ठीक है. उस मोटी सी किताब में, मुझे नहीं पता वो किताब कितनी मोटी बनेगी सिर्फ एडिशन अगर बोला जाए, तो उस मोटी सी किताब के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं. और वो चैप्टर आपने कौन सा रेफर करना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि ये 4 + 4 लिखा हुआ है या √2 + √3 लिखा हुआ है, 3x + 4y लिखा हुआ है, या पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, या मैट्रिक्स लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है. तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड पे इस सिंबल के लिखे हुए हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कौन सा चैप्टर रेफर करना है. उस चैप्टर को जब आप खोलोगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर आपको इस सिंबल के लेफ्ट और राइट साइड पे ये दिखे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं. तो दिस सिंबल सिंपली रेफर्स यू टू द बुक
That chapter is being referred by the two species left and the right hand side of this symbol. ठीक है? Don't you think सारे symbol ऐसे ही behave कर रहे हैं? हर symbol का मतलब इस number के साथ बदल जाता है. Clear? Okay. इतना समझ में आया? तो इस सिंबल का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. ये सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा है टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच यू आर सपोज्ड टू फॉलो इफ दिस सिंबल इज एनकाउंटर्ड. तो ऐसे तो मैं कुछ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, कोई भी सिंबल डिफाइन कर सकता हूँ. ठीक है? जैसे मैंने बेल को डिफाइन किया, बेल अगेन इट बिकम्स एन ऑपरेटर. ये एक सोशल ऑपरेटर हो सकता है, एक स्टिमुलस ऑपरेटर हो सकता है, बट व्हेनेवर यू गेट दैट स्टिमुलस यू आर सपोज्ड टू फॉलो अ सर्टेन इंस्ट्रक्शन. जैसे कि उसको आपने ट्रेन कर दिया, डॉग को एक ट्रेन कर दिया कि ये जब इंस्ट्रक्शन हो तुम्हें ये करना है, ये हो तो ये करना है. सेम है. These are mathematical operators. Is it clear? अच्छा, इनकी एक uselessness और दिखाता हूँ मैं आपको. Can you imagine from where do we get this symbol? From the power thing. Where do we get this symbol? What's the origin of this symbol? No, I don't know the origin. Its origin is this. क्या? Origin is this. ये क्या लिख गया? Root. 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 Okay. Doesn't it look like an R? Yeah. It is not. It doesn't look like an R. It is an R. I believe ये वाला symbol आपने देखा होगा. Yeah. Integration. ठीक है? ये symbol भी देखा होगा. Sigma. What does it mean? To sum everything. Like, okay. A certain. It is S of Greek. Again, sum. Can you see the uselessness of these symbols? They are just arbitrary, simple symbols. But they have a set of instruction. And mind it, the instruction can be added. जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूँ, this is repeated addition. यानी कि 2 को 2 के साथ 4 बार ऐड करने की जगह हमने एक बार into लगा दिया. And do you know why it is called into? No. Because whenever they were doing target practice, they would make a cross. You have to hit into this. ठीक है? कितने useless symbols हैं. But they give us a hint of instruction. That is what they do. Instruction. Clear? तो ये हमारे पास है operators. अब अगर ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऑपरेटर डिफाइन कर सकता हूँ. ठीक है? Even if I don't have to give the instruction, but ऐसा करते हैं, एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं H. And Mr. Hamiltonian said, I'll give the name of my alphabet, my name, Hamiltonian operator H. Now this operator works on a function psi. अब देखो ऑपरेटर किसी पे भी वर्क कर सकता है, नंबर पे वर्क कर सकता है, फंक्शन पे वर्क कर सकता है, वेरिएबल पे वर्क कर सकता है, प्रोसेस पे वर्क कर सकता है. इंस्ट्रक्शन ही तो है, ये करना है. So now it works on a function psi. When it works on a function psi, it will give us a property of psi. जैसे कोई भी वर्क करता है तो कुछ ना कुछ बताता है हमें. तो it gives us E of psi. When the Hamiltonian operator works on psi, it gives us E of psi. ठीक है? Let us say E is the energy. And this is the operator working on psi. ठीक है? It gives us energy of psi. Clear? कोई दिक्कत? This is Schrodinger equation. समझ आया? कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत. कमाल है. इसमें समझ क्या आ सकता है? कुछ समझ आ सकता है इसमें? No. H psi will be E psi. H
H psi is equal to E of psi. हाँ, क्या समझ आ सकता है इसको? कुछ समझ आ सकता है? हर किस ने? हाँ, आपको तो ना समझ में आनी चाहिए वाली चीज भी समझ में आ गई. Very good, very intelligent. This is the simplest and the most useless form of Schrodinger equation. Simplest. And the most useless form of Schrodinger equation. इससे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि you actually have to decide what the set of this instruction is. ये तो सिंपल है. ये रेफर किसको कर रहा है? वो किताब कहाँ है जिसको ये रेफर कर रहा है? वो किताब आपको लिखनी है. What is this H? What is this operator which works on psi to give E psi? And most important, what is this psi? It's psi, yeah. ये है क्या? ये भी तो एक सिंबल ही है. ठीक है? कितनी मजेदार सी चीज है. Now, when this H works on psi, it gives us energy of psi. Energy चीज जब हम बात करते हैं, हम दो तरह की एनर्जी की बात करते हैं, kinetic energy and potential energy. So this energy would in itself be having two parts. So E operator would actually be the sum of two operators. One, the kinetic energy operator T, and another, the potential energy operator V. Okay, so it's going to be actually H psi would be equal to T psi plus V psi. Okay, so this would be another form of Schrodinger equation, another useless form. ठीक है. अब बात आती है कि how to write a Schrodinger equation. अच्छा, एक बात पता है आपके बोहर की थ्योरी का सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? सबसे पहला ड्रॉबैक बोहर की थ्योरी. There were drawbacks in Bohr's theory. क्या ड्रॉबैक था? Apart from it being absolutely wrong. पहला I think that अच्छा, दूसरा बता दो, पहला नहीं आता. एंगुलर मोमेंटम का था कि उसने वो postulate है, NH/2 is equal to mvr. नो एक और आई थिंक एक इक्वेशन सी थी समथिंग रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हाँ, तो वो तो सीधा सीधा इक्वेशन थी ना. हाँ, he couldn't explain that Why it is true. NH/2 is equal to mvr equal क्यों नहीं है, सीधी सी बात है. that was इतनी देर से वही तो बोल रहा हूँ. postulate उसका गलत था, उसका कोई रीजन नहीं था. हाँ. वो तो खैर assumption बहुत सारे हैं. Do you know that Bohr's theory is applicable only to a single electron system? Hydrogen. नहीं, hydrogen-like species. हाँ, hydrogen. All species which have only one electron in it. Do you know what the reason of that? No. Why Bohr theory is applicable only to the single electron system? Why not multi-electron system? Maybe because of the orbits it has and the. तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है? Bohr की theory talked about the energy of the electron in an atom. Here he talked about the attractive force between the electron and the nucleus. वो आपने लिखा भी है इसमें. वो पूरा का पूरा आपने derivation किया है. That En is equal to वो पूरा, ठीक है, गंदा सा derivation. Please understand, if we have another electron, then in addition to the attractive force between the electron and the nucleus, there will be a repulsive force between the two electrons. ठीक है? चलो, अब आप सोचोगे, शायद सोचो कि what's problem in it? We can actually calculate the repulsive force as well. तो what's the problem? है तो है, ठीक है, एक टर्म और आ जाएगी, प्रॉब्लम क्या है? That will change with the number of electrons in. We have two electrons. Then what's the problem? That will not change with the number of electrons. That will change with every instant. Yes. The equation is going to become time dependent. And if it becomes time dependent, you will have to calculate the energy at every instant, every position of the electron. And the calculation is going to become so tedious that even today's supercomputer will not be able to do it. So it was not actually drawback of Bohr's theory. It was actually mathematical constraint.
ठीक है? The important thing is the same constraint holds true for this equation as well. So what we are going to do, we are going to write the simplest Hamiltonian operator, or rather we can even say simplest Schrodinger equation for hydrogen atom. ठीक है? The simplest Schrodinger equation for hydrogen atom is This is the simplest equation. Yeah, this is the simplest equation. Problem क्या है इसमें? मैं बताऊँ क्या प्रॉब्लम है? ये लिखा क्या है? कौन सी लैंग्वेज है भाई ये? है ना? ये उल्टा 6 बना दिया, फिर एक त्रिशूल बना दिया, फिर लास्ट में इक्वल टू 0 लिख दिया। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, क्या है ये? अब इन सारे के सारे सिंबल्स के मतलब होने चाहिए, ठीक है? What could be the meaning of these symbols? Now, सबसे पहले जरा इस उल्टे 6 का मतलब ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है? I believe आपने किया होगा थोड़ा सा dx, dy by dx, dy, वो d. What's the meaning of that d? That you differentiate. अरे d का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन तो हो गया, ठीक है, d का मतलब क्या है? D का मतलब है? dx का मतलब क्या है? dx is something, okay. मेरे को dx as separate का वो नहीं पता, मतलब like dx by dy का. But आप dx by dy फिर कर कैसे लेते हो जब आपको ये नहीं पता dx होता क्या है? dy by dx. Derivative of x ना dx. Derivative of x का मतलब क्या है? But it's not derivative. I think it is. It's differential. हाँ, difference. Differentiation. Yeah. You also say it has derivative. पता नहीं, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता। तो dx का मतलब क्या है? मुझे confusion है थोड़ा सा। dx का मतलब क्या है? Have you done differentiation by first principle? Yes. वहाँ पे dx आता है, कैसे आता है? dx by dy is set to be the first derivative. एक मिनट मैडम, starting with it, first principle, differentiation by first principle. I think उसमें x plus delta x होता है। Derivation किया है पूरा derivation, differentiation by first principle. Okay, आप कौन से derivation मैंने differentiation की बात कर रहा हूँ। differentiation के सिर्फ 4 फॉर्मूले दिए गए थे, वो learn. That is the differentiation that we have been taught. Differentiation But the proper mathematical जो physics में जितनी काम आती है, मैथमेटिक्स में आपने differentiation अभी नहीं किया है। That is December का। Okay fine, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर की। यहाँ पे मुझे वो चीज़ पढ़ानी पड़ती है जो मुझे खुद नहीं आती, जैसे कि मैथमेटिक्स। एक बात ध्यान से सुनो, D हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि एक सिंबल है D, एक है डेल, एक है डेल्टा, एक है दिस डेल्टा। ये सारे सिंबल देखे आपने? हाँ। सारे देखे हैं? ये देखा है? ये भी देखा। ये अभी देखा, वेरी गुड। ये देखा है? हाँ, देखा है। कहाँ पे यूज होता है वो देखा? एक और देखा था, कल परसों में देखा था, something that shows that the change is very less. Okay. और ये फिजिक्स में देखा था, to show कितना चेंज हुआ है किस चलो, सबसे पहली बात, this means change, यानी कि it is always final
minus initial, irrespective of its magnitude. बड़ा हो छोटा हो कैसा भी चेंज हो, this is final minus initial. ठीक है. This is very small but measurable quantity. Very small but measurable quantity. Is it clear? Most often chemistry में हम इसको यूज करते हैं चार्ज सेपरेशन के लिए. A, B इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा लगा दिया जाता है. ये यहाँ पे very small but measurable. ठीक है. These two symbols are used for infinitesimally small quantity के लिए, which cannot be measured. इतनी छोटी क्वांटिटी कि मेजर नहीं हो सकती. ये सिंबल दोनों उसके लिए यूज होते हैं. अब ये सवाल आता है कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल फिजिकल सेंस में हम कैसे इमेजिन करें. बोल तो देते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. तो लेट्स सी, हमारे पास एक नंबर है 1, एक नंबर है 0.9 बार. आई होप यू नो व्हाट्स, दोनों में से बड़ा कौन सा? 1 is greater than this? By how much? By D. That's infinitesimally small. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है. ये मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि कितना ही करते जाओगे 0.00000 लगते चल जाएंगे इनफाइनाइट. और ये पता है कि लास्ट में कहीं 1 आएगा, और वो लास्ट कहाँ है? वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है. फॉर ऑल पर्पसेस वी टेक देम टू बी इक्वल. अब 0.9 बार को अगर आप यू नो हाउ टू कन्वर्ट द रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, तो जब आप करोगे तो वो 1 आ जाएगा. ये 1 के बराबर आ जाता है. लेकिन उसमें भी एक assumption लिया जाता है कि subtracting 1 और adding 1 to infinity doesn't make a difference. वो assumption है. उससे ये दोनों इक्वल आ जाते हैं. Otherwise this is greater. और दोनों के बीच का जो difference है, that is infinitesimally small. Del and D stand for that. आपने differential के फॉर्मूले किए, आपने सिर्फ D किया, आपने del नहीं किया. Reason, you were using the quantities which were having just one variable. ठीक है. अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो आप एक बार में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तब आपको 2 बार में 3 बार में करना पड़ेगा. सो डेल स्टैंड्स फॉर दैट पार्शियल डिफरेंशियल. इज इट क्लियर? ठीक है. Schrodinger equation we are going to do in the next class.